Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Tanveer Iqbal, teacher boys high school Shatigam. Today I shall deliver the lecture for class 7th. We will start chapter number 10. So students, please open your textbook page number 126. We have studied chapter number 2, digestion. That means the breakdown of complex food particles substances into that very state which can be easily absorbed by the blood and transported by the blood to every cell of the body. Since the food is energy, the energy reaches to the every cell of the body. But when it reaches there, it is not directly accessible, directly used. It is not in the usable form. It has to be furthermore broke down into the level of the substances which can be break down by the part of the cell which is called a powerhouse of the cell, that means generator of the cell, which is the mitochondria. When this food particle reaches mitochondria, there it breaks down further and the energy is released from that food particle, which is the ultimate soul, ultimate goal, ultimate product of the food taking, or which is the energy. We have already studied in the very sixth class, in the very first chapter, that why do we take food? The question number one of the chapter number one of class 6. Why do we take food? The answer is we take food to get energy for the daily processes of the life. That very sentence, the process of obtaining energy, it takes full digestion, it takes full complete digestion in the alimentary canal, and after that, through transportation, the process of transportation, which is the complete half of the science in the 11th class, then it takes whole of the respiration, which is also a big topic of study. But here we have to see the general clues, general concepts of these processes. So the respiration is the breakdown of food in the cell with the release of energy. It's called respiration. Since it takes place in the cells, it is the cellular respiration. It is the cellular respiration. This respiration are actually the two processes. One is the breathing. We take air inside our lungs and we exhale the air out from the lungs. It is the first process of breathing, and the second process is the general breakdown in the cells, that is cellular respiration. So breathing is integral part of this respiration. Sometimes we get confused, we intermingle the words respiration and breathing. We say that the respiration is breathing, but actually it is not. Breathing is a small concept, while as respiration is the whole big concept. Breathing is part and parcel of the respiration. Since respiration needs oxygen, if it is and if it is aerobic respiration, it needs oxygen. So the oxygen is that very gas which we intake from our nose to the lungs. We take it from air. This cellular respiration takes place in the cells of organism, where the glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. It is exactly the reverse of the photosynthesis which we have studied in chapter number 2, respiration in nutrition in animals, nutrition in plants, chapter number first, sorry. It is exactly the reverse of the photosynthesis by which the plants make their own food. Here, the food glucose already reached to the intestine, or to the every cell of the body, where that glucose is broken down into carbon dioxide and water, and the energy is released, which is the ultimate soul, ultimate goal of the food intake. If the breakdown of glucose takes place in presence of oxygen, then it is aerobic respiration.
But food can also be broken down without the oxygen. This is called anaerobic respiration. If you see the reaction, this is the reaction which is almost exactly the opposite of the photosynthesis. In photosynthesis, 6 times water and 6 times CO2 match to give glucose and 6 O2, and here energy is released. If it is without the oxygen, if it is without the if it is without the oxygen, if it is with the oxygen, this is carbon dioxide plus water plus energy. If it is without oxygen, it is alcohol plus carbon dioxide plus energy. Alcohol plus carbon dioxide plus. Let me tell you, there are some organisms such as yeast which survive with the absence of oxygen or air. They are called anaerobes. उनको anaerobes कहा जाता है. जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव करते हैं वो anaerobic respiration करते हैं. anaerobic respiration क्या होता है? anaerobic respiration से ये होता है कि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल प्लस कार्बन प्लस एनर्जी निकलती है. जो यीस्ट हैं ये है सिंगल सेलड ऑर्गेनिजम्स, एक सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो अल्कोहल यूज करते हैं. ये दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर. वाइन एंड बियर जो शराब के अकसाम हैं जो हराम है हम पे, वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ये. अब एक और कंसेप्ट है यहाँ पे. जब हम देखते हैं कि कोई भी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर, अगर क्रिकेट प्लेयर हो 100 रन बनाता है, 100 रन की आसपास बनाता है, तो उसको बोलते हैं कि मसल क्रैम्प्स हो गई, मसल क्रैम्प्स हो गई. या फुटबॉल में बहुत ज़्यादा दौड़ लगाते हैं उसको मसल क्रैम्प्स होती हैं. वो क्या होती है? या हम अगर भी कोई काम करेंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे या कोई और करेंगे, एक तो ऑलरेडी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा चलती है, उसके बाद हमारे मसल्स में फैटीग हो जाता है. क्या होता है? फैटीग हो जाता है, यानी मसल क्रैम्प्स हो जाती है. वो क्या होता है? वो यही होता है. जितनी नीड हमें किससे होती है, जितनी नीड एनर्जी की हमें होती है एरोबिक रेस्पिरेशन जो वो नहीं दे पाती है, वो रेस्पिरेशन नहीं दे पाती है उतनी सारी. उसके बाद क्या होता है? मसल्स स्टार्ट टू रेस्पायर एन एरोबिकली. जो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, ग्लूकोज होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, उसको ब्रेक डाउन होता है. मगर एयर जब इतना इंटेक नहीं करता है, शांश खसान. दैट इज द रीज़न फॉर द शांश. शांश क्या खसा. तो क्या होता है? अगर कोई है एक्सरसाइज करेंगे, हम रनिंग करेंगे, ज़्यादा तेज साइकिलिंग करेंगे, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स, बंगस जाएंगे, कहीं और करेंगे, हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे, एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है. मगर ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ही आती है जितनी हम करते हैं. हम बहुत ज़्यादा करते हैं ये सांसें, मगर उतना नहीं दे पाता है. फिर क्या होता है? फिर यही होता है कि ये जो होता है एनएरोबिकली रेस्पिरेशन होती है मसल्स में. उसकी वजह से जब लैक्टिक एसिड वहाँ पे पैदा होता है, उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होती हैं. उसके बाद जब हम बैठ जाते हैं, जब हम रेस्ट में आते हैं, तो धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन हो जाता है एरोबिकली और वो लैक्टिक एसिड ख़त्म हो जाता है यहाँ चेस्ट और करा, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस होता है. दैट इज़ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन.